नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जहां विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी मोदी को घेरने के लिए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का सहारा ले रही है, तो वहीं अब उनके ही वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने मोदी का समर्थन करते हुए ये बता दिया है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जी हां, मोदी को लेकर गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब विपक्ष के कई बड़े नेता मोदी सरकार के समर्थन में आ रहे हैं। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार, फिल्म मेकर, ब्रिटेन प्रमुख ऋषि सुनक, अमेरिकी सिंगर के साथ साथ कांग्रेसी नेता भी मोदी का समर्थन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बनी इस डॉक्यूमेंट्री पर आपत्ति जता रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार का समर्थन किया था, जिसके बाद कांग्रेस में उनकी काफी आलोचना की गई, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस से ही इस्तीफा दे दिया है। और अब तो कांग्रेस अध्यक्ष पद से हारे शशि थरूर ने भी मोदी सरकार के समर्थन में बयान देकर हड़कंप मचा दिया है और लगातार शशि थरूर की भी आलोचना हो रही है। जी हां, एक तरफ जहां कांग्रेस मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को मुद्दा बनाकर मोदी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर ने इस पर बड़ा बयान देते हुए ये कह दिया है कि अब इस पर बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पर मचे बवाल पर बयान देते हुए ये कह दिया कि भारत को अब इस त्रासदी से आगे बढ़ना चाहिए। लोगों को लगता है कि इस 2 दशक पुराने मामले को पीछे छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में अपना फैसला सुना चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया कि वो उन लोगों पर आक्षेप भी नहीं लगा रहे जिन्हें लगता है कि गुजरात दंगे का अभी पूरा सच सामने नहीं आया है। अब इस बयान के बाद उनकी काफी आलोचना हो रही है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी इस बयान से काफी हैरान हैं और उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है, जिस पर थरूर ने अब सफाई भी दे दी है। शशि थरूर ने इस मुद्दे पर दिए अपने बयान पर फिर से बात करते हुए ये कहा है कि लोग मेरे विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन 4 दशकों के सांप्रदायिक मामलों पर उनके रिकॉर्ड और 2 दशकों तक गुजरात दंगा पीड़ितों के साथ खड़े होने पर कोई भी उंगली उन पर नहीं उठा सकता है। देश के धर्मनिरपेक्ष लोगों को अब इस मुद्दे पर दुर्भावनाग्रस्त रहने से कुछ हासिल नहीं होगा, ये भी शशि थरूर ने एक बार फिर से कह दिया है। यानी कि शशि थरूर का यहाँ पर कहना साफ है कि इस मुद्दे को भुनाने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अब आपको बता दें कि बीबीसी ने गुजरात दंगों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसे सरकार ने प्रोपेगेंडा फिल्म बताते हुए इस पर बैन लगा दिया है। अब इसी पर बवाल मच गया है, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि बीबीसी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में साल 2002 में हुए गुजरात दंगों में उस वक्त के सीएम रहे नरेंद्र मोदी की भूमिका पर ही सवाल खड़ा कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नरेंद्र मोदी को बरी कर चुका है। यानी कि यहाँ पर यह साफ बीबीसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़ा कर रहा है, जिस पर सरकार ने बैन लगाया और विपक्ष को प्रेस की स्वतंत्रता पर आघात जैसे मुद्दे उछालने का मौका दे दिया। लेकिन विपक्ष के नेता शशि थरूर इसे बेवजह का मुद्दा बता रहे हैं। वहीं इस डॉक्यूमेंट्री का सहारा लेकर जब पाकिस्तानी पत्रकार ने अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस से सवाल पूछा, तो उन्होंने लोकतंत्र का जिक्र करते हुए पाकिस्तानी रिपोर्टर की बोलती बंद कर दी थी। मोदी सरकार का समर्थन लगातार हो रहा है। विपक्ष के नेता भी मोदी सरकार के समर्थन में हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जिस तरीके से सवाल खड़ा किया जा रहा है, उसे कोर्ट की अवमानना बता रहे हैं। अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिस पर पाकिस्तानी पत्रकार ने मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर सवाल पूछा था, तो उस पर किस तरीके से व्हाइट हाउस ने जवाब दिया था और पाकिस्तानी पत्रकार की बोलती बंद हो गई थी। Was a former chief minister. It happened right under his nose. 2,000 people were burned alive. Again, I'm not familiar with the documentary you're referring to. I am very familiar with the shared values that connect the United States and India. I don't think about domestic politics, and neither does anyone in this building. Last week I had asked you about Narendra Modi and how the US has compromised on some of its values. And the BBC just released a documentary on Modi, on how he had butchered, and the report was just released. It was a government report. BBC just released it. It was made by a former secretary, in which he has even mentioned higher number of deaths, higher numbers of women raped, and it was just done right under the nose of Narendra Modi. I had never challenged the strategic interest of the US with India, but I regret the fact that since last 8 years that I've been covering the State Department, I have not seen once an official standing here at UC condemning Narendra Modi himself individually
not just as a prime minister, but individually his acts. And I'm sure the US officials were aware of it as well. I'm not aware of this documentary that you point to, but what I will say broadly is that there are a number of elements that undergird the global strategic partnership that we have with our Indian partners. There are close political ties, there are economic ties, there are exceptionally deep people-to-people ties between the United States and India. But one of those additional elements are the values that we share, the values that are common to American democracy and to Indian democracy. India, of course, is the world's largest democracy. It's a vibrant democracy, and again, we look to everything that ties us together, and we look to reinforce all of those elements that tie us together. So my godfather is an Indian as well, by the way. So I have all the respect for India. Don't get me wrong, anything. But I just regret the fact that how is it possible that the State Department officials who were posted there at that time did not know that this individual who's a former chief minister, it happened right under his nose. 2,000 people were burned alive. Again, I'm not familiar with the documentary you're referring to. I am very familiar with the shared values that connect the United States and India as two thriving, vibrant democracies. When we have concerns about actions that are taken in India, we've voiced those. We've had an occasion to do that, but we want first and foremost to reinforce those values that are at the heart of our relationship. One follow-up, but do you think that such foreign policy has affected President Biden's Indian voters here in the US, though? We don't think about it through those terms. I don't think about domestic politics, and neither does anyone in this building. Do note that this has not been screened in India, so I am only going to comment on the context of what I have heard about or have my colleagues have seen. Let me just make it very clear. We think this is a propaganda piece designed to push a particular discredited narrative. The bias, a lack of objectivity, and frankly a continuing colonial mindset is blatantly visible. If anything, this film or documentary is a reflection on the agency and individuals that are peddling this narrative again. It makes us wonder whether about the purpose of this exercise and the agenda behind it, and frankly we do not wish to dignify such efforts.